Hello, my dear students. Welcome on the session of 9th May. Uh, we have seen chapter 1, chapter 2, chapter 3, right? Between these, hope so you are doing well. You are watching my videos, you are going through my notes, PDF and all. First crop, second microorganism, third about fibers and plastic. Okay. Now we are moving towards the chapter which was little bit related to your class 7th. In 7th standard, 4th chapter was heat. Let me remind you, 4th chapter was heat. So in the heat, you had learned two terms, insulator and conductor. Why? Because heat will transfer from one end to another end. So if it is insulator and conductor, then we had seen conduction, convection and radiation. याद आया कुछ? Conduction, convection and radiation. So in the conduction, who can follow the process of conduction? Those who are conductors. So this chapter also is related to that chapter only. Conductors who can allow to pass electricity and heat. So in this chapter, metal and non-metal, metal and non-metal, these two words you are familiar with. Am I right? Okay, accordingly, metal, non-metal, metal has different properties compared to non-metal. Means both are having different physical properties as well as chemical properties. Chemical means reaction with chemical and physical means appearance. Suppose this is, if I say this marker has its own physical property, so iska physical property means how does it look like. कौन से टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है, इसको मैं बैंग करूँ तो कौन सा वॉइस आता है. आई कैन पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड और नॉट. दिस एवरी क्वेश्चन is coming in the physical properties. So first one, metals and non-metals, right? Metals, one type of conductors. Non-metals are insulator. कैसे? वो भी हमारे पास प्रूफ है. मेटल में क्या आता है? आयरन. सिंपल एग्जांपल, मेटल में क्या आता है? आयरन. ओके, आयरन, इफ आई टॉक अबाउट आयरन, देन आयरन पास इलेक्ट्रिसिटी. यस. इंसुलेटर हुआ? नो. कंडक्टर हुआ. सो मेटल दे आर कंडक्टर्स, नॉन मेटल्स दे आर इंसुलेटर. इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. मेटल का शेप चेंज हो सकता है. बाय गिविंग द हीट वी कैन चेंज द शेप ऑफ मेटल, while non-metal will never change the shape by giving heating or cannot be drawn into thin sheets. Drawn into thin sheets मतलब हम वायर नहीं बना सकते. Suppose रबर है, रबर, not eraser but rubber, material made up of rubber cannot be drawn into wire. We can make wire of rubber? No. We can pass the electricity from it? No. So they are non-metal. Now likewise we will see first of all iron, coal, sulfur, copper, aluminium. इसमें से आपको पता चल रहा है कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है. चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं. इसमें से कौन सा मेटल कौन सा नॉन मेटल? टेल मी. आयरन, आयरन क्या होगा? मेटल, नॉन मेटल? व्हाट इज आयरन? आयरन इज मेटल और नॉन मेटल? आयरन इज मेटल. व्हाई? हमको पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. कॉल? नो, कॉल इज नॉन मेटल. सल्फर, सल्फर आपको आइडिया दे दूं, सल्फर इज येलोइश कलर पाउडर एंड समटाइम्स सल्फर इज द वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक कंटेन्ड आल्सो इन द एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक के अंदर कंटेंट भी होता है सल्फर का, एंड दैट सल्फर समटाइम यूज्ड टू टेक इन द bacterial disease as an antibiotic, and for some allergy also we are taking in the form of medicine. That is sulfur, yellowish color powder. So powder can pass electricity? No. Sulfur non metal. Copper, copper के वायर आते हैं. Copper metal. Aluminium is metal. Likewise we can just assume, but some questions I have prepared for you, so you will give me answer and I'll tell you that this is metal and non metal. Let's start. Identify metal and non metal. First one, physical and chemical properties. फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स बॉडी की प्रॉपर्टीज और केमिकल मतलब रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी. सो द केमिकल प्रॉपर्टीज वी विल सी आफ्टरवर्ड्स. फिजिकल प्रॉपर्टी, कैन यू चेंज द शेप ऑफ दिस थिंग्स ऑन हिटिंग और ऑन बीटिंग? बीटिंग मतलब उसको मारना. जैसे हम सुधारने के लिए स्टूडेंट को मारते हैं, ऐसा करते हैं? नहीं, डांटते हैं सिर्फ, है ना.
यहाँ पे मारने की बात है. Can you change the shape of these things on beating? We can change the shape on beating, hitting पे, beating पे. अगर हाँ तो metal है. Second one, देखो मैं लिख रही हूँ, if yes then it's metal, means it has properties of metal. If हाँ तो metal है, ना तो non metal, ना no metal. Does it produce any ringing sound? Does it produce any ringing sound? Ringing मतलब कि अगर I have ring, अब उसको मैं गिराऊंगी तो ringing sound आया. Okay, गिरा दी. So तो क्या होगा? Does it produce ringing sound? Yes. तो वो क्या है? Metal. Does it pass heat and electricity? अगर करंट लगता है, आज में कुछ मेटल का है तो मेटल से इलेक्ट्रिसिटी तुरंत कैच हो जाती है and we get shock. So that is, does it pass electricity? Yes, then it's metal. Can we change shape of sheets and wires? Means beating और hitting से can we change the shape into sheets and wire? मतलब वो उससे मैं शीट और वायर बना सकती हूँ. सपोज मेरे पास आयरन का इतना प्लेट है, वो प्लेट में से मुझे आयरन का वायर बनाना है. एल्यूमिनियम का प्लेट है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम वायर बनाना है. Can we change? Yes. Why? We will give you heat, it will melt and we can mold, we can change into sheets and wires. Can we hold it when it is hot? अगर गर्म है तो हम होल्ड कर सकते हैं. अभी इसमें आंसर आएगा नो. ये एक्सेप्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर नो आंसर आया तो वो मेटल होगा. ये सब में यस आंसर आया तो वो मेटल होगा. अंडरस्टूड? मेरी रिंग गिर गई. सो ये था हमारा आइडिया कि मेटल क्या होगा, नॉन मेटल क्या है. राइट? We will see now some definition: malleability, ductility, sonorous sound. For that, so यहाँ पे रहो, दूसरा पार्ट आ रहा है जो वर्ड रब करना पड़ेगा. आ गए हम सेकेंड पार्ट पे, सब रेडी करके आपके लिए. फर्स्ट वन, बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रिलेटेड टू दैट some definitions, let me tell you first activity 1, 4.1 and 4.2. 4.1 in that activity, over there in the diagram if you will see, then one hammer is there and iron nail is there. So iron nail, if on the hammering, on the striking or on the hammering, iron nail will change its shape, right? So that is metal. So which can change its shape or which can be drawn into sheets or wires, that is metal. Already I had discussed. 4.2, in that this is circuit diagram. Am I right? Circuit diagram यहाँ पे वहाँ पे draw नहीं किया है. 4.2 में normal diagram draw किया. So if you want to explain properly in a scientific term, then you can draw like this diagram. Battery, this is bulb, iron nails and switch. Now switch is off. I will turn on the switch, that time bulb will glow. Yes, but here I have connected iron nails, then bulb will glow. Yes, then it is good conductor and it is metal. But instead of iron nail, if I connect here rubber, then bulb will glow. Rubber के साथ नहीं होगा, iron nail के साथ होगा. That rubber is not metal, iron is metal. ये एक्टिविटीज है. विद द हेल्प ऑफ सम एक्टिविटीज वी कैन से दैट what are in the line of or what are in the classification of metals and non-metals. Understood? Now we will see three definition. So by help of three definition we can say what is metal and what is non-metal. Sorry, first one, the property of metal. किसकी प्रॉपर्टी? मेटल की. प्रॉपर्टी मतलब ऐसा नहीं. Okay, property means here structure or some type of characteristics. The property of metal by which they can be beaten. They can be beaten into sheets. Beaten मतलब मारना, sheet मतलब कि sheets बनाना. Okay, they can be beaten into sheets is called malleability. Malleability. The property of metal by which they can be beaten into sheets is called malleability. मतलब sheet बना सकते हैं तो वो term को बोलेंगे malleability. Second one, the property of metal by which they can be drawn into wire. Sheets, malleability. They can be drawn into wire, ductility. They can be drawn into wire. Wire किसके लिए काम आता है? Conduct करने के लिए, right? So that is ductility. The properties of metal by which they can be drawn into wires called ductility. Metals which produce ringing sound on striking.
on striking which produce ringing sound. Suppose मैंने ये बोला था कि if I will throw my ring then क्या होगा, ringing sound होगा. So ringing sound on striking is called sonorous. So ductility, malleability and sonorous. Malleability means which can be convert or which can be beaten into a sheet, which can be that is malleability, which can be drawn into wires, that is ductility, and which produce sonorous sound on striking or on falling on the floor, that is sonorous. So these three characteristics if you will find, or these three properties if you will find in any kind of thing, then it will be metal. Understood? So after this we can conclude that metals are hard, right? Metals are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, good conductor of heat and electricity. Hard, you know very well, it's hard. उसको गर्म करेंगे तो ही वो दूसरी शेप में चेंज होगा. Lustrous means shiny and soft. Shiny मतलब कि ये shiny है, ये metal है, ये shiny है. So this is lustrous. Malleable means malleability, मतलब sheet बना सकते हैं. Ductile means ductility. Ductility मतलब कि वायर में ड्रॉ कर सकते हैं. Sonorous means ringing sound प्रोड्यूस होता है. और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर सकते हैं, हम हीट पास कर सकते हैं. अंडरस्टूड? सो वी कैन कंडक्ट दिस, वी कैन कंक्लूड दिस ऑल थिंग आफ्टर वॉचिंग दिस. तो ये क्या था कि मेटल ऐसे होते हैं, ये होगा तो वो मेटल हो सॉरी ये होगा तो वो मेटल हो गया. मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड सोनोरस, and we can conclude this all thing. So this all about physical property. Now we are going to see chemical property in that reaction with acid, reaction with base, reaction with salt, reaction with water, reaction with oxygen. कि ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्शन मिलेगा, ओके, what product we will get. So that those are chemical properties. So this physical property in that three main definition, and these all are properties. This all words related to that only. So this I will give you homework. Till there, watch my video, like my video, subscribe my channel, and if you are really understanding, then leave the comment on comment box. तब तक के लिए मिलते हैं, ख्याल रखना, बाय.